तक हुआ था, एक बार बताओ जल्दी। तुम लोग तो क्या चल रहा था, वाटर ना? नहीं, कौन सा चैप्टर चल रहा था? सर एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। अच्छा, तुम लोग तो एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर चल रहा था, तो वो शायद 9 में चल रहा था। तो कहाँ तक बताए थे तो बताओ, तब याद नहीं आ रहा है। सर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स। अच्छा, और मेटल, नॉन मेटल, वो मेटलॉइड्स खत्म ये हो गया बता दिए थे, हो दिया था ना? सर, अच्छा अच्छा खत्म हो गया था। अच्छा। कंपाउंड्स बताए थे? नहीं सर। अच्छा, कंपाउंड्स नहीं बताए थे, मिक्सचर नहीं बताए थे। ठीक है, चलो हेडिंग करो, कंपाउंड्स। जूम में प्रॉब्लम दे रहा है बच्चों, आप लोग गूगल मीट भी डाउनलोड करके रखना, ठीक है? अगर बाई चांस कभी जूम में कनेक्शन ना हुआ तो मीट से क्लास होगा, ठीक है? ठीक सर। क्योंकि बहुत देर से कनेक्ट करने की कोशिश किए तब जाते अभी कनेक्शन हुआ। कल जैसे क्लासेस हो ही नहीं पाया, 2 क्लासेस कल नहीं हो पाया, मेरा भी नहीं हुआ, संदीप सर का भी नहीं हुआ, जूम का बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। देखो, कंपाउंड्स मेरा क्या है, हम लोग अभी तक क्या पढ़े? एलिमेंट्स पढ़े थे, ठीक है? एलिमेंट्स हम लोग क्या बोले थे, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंसेस का, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जो डिवाइडेड था 3 पोर्शन में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, एंड एक्स्ट्रा पोर्शन वाज नोबल गैस। नाउ ये कंपाउंड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये याद कर लेंगे, कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंसेस का पार्ट था या नहीं था? कंपाउंड मेरा प्योर सब्सटेंसेस का पार्ट था या नहीं था? सर प्योर सब्सटेंस का पार्ट था। प्योर सब्सटेंसेस का पार्ट था, तो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब कंपाउंड जो है वो बेसिकली एलिमेंट से बना हुआ है, 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है? अब वो मोर एलिमेंट्स जो है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है? बट दे आर combined in a definite proportion by mass, then it is known as compound. Okay, देखो, तो डेफिनेशन हम लोग क्या लिखे थे कि कंपाउंड हम लोग जैसे पढ़े थे, तो बोल ही सकते कि द सब प्योर सब्सटेंस, the pure substances which composed of 2 or more elements, okay, 2 or more elements combined chemically in a definite proportion by mass, in a definite proportion by mass is known as compounds. Those pure substances in which 2 or more elements are present and they are present in a definite proportion by mass, then it is known as compound. Okay, अब याद करो, कंपाउंड्स का यूनिट हम लोग क्या बताए थे?
कंपाउंड का यूनिट क्या बताए थे? यूनिट ऑफ कंपाउंड्स इज मॉलिक्यूल, याद करो, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एटम तो हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना कंपाउंड। अभी ये जो मॉलिक्यूल है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड का। हर एक मॉलिक्यूल मेरा मल्टीप्लाई होते हुए, कंबाइन होते हुए कंपाउंड बनता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम लोग वाटर कंपाउंड बोल रहे हैं, एक बार शायद बताए थे तुम लोग तो ये, अगर मान लो कि 1 ग्लास ऑफ वाटर अगर हम लोग बता लें, 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो इट्स एवरी पोर्शन कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, each and every H2O is a molecule and total this is water compound. Okay, now what is the definite proportion by mass? Suppose we are taking water, so here we have two things, hydrogen and oxygen. So what is the mass of hydrogen? Mass of one hydrogen is 1 gram, so two hydrogen is 2, and oxygen having mass is 16, 1 oxygen. So what is the ratio of mass for hydrogen and oxygen in water? That is becomes 1:8. Okay, this ratio is fixed whatever the source of water. If you will take water from river, or you will take water from sea, uh, or drain, or coconut water from anywhere, this ratio is fixed. Hydrogen and oxygen, the ratio is fixed. That's why it is known as compound, where hydrogen and oxygen are chemically combined with each other, but they are combined in a definite proportion, and it is a pure substance. Okay. Now, next we will see characteristics of compounds. डेफिनेशन समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आया? हेलो। Yes, sir. ओके, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स तुम लोग लिखो, हम डिक्टेट कर रहे हैं। ठीक है, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, हम शॉर्ट में लिखेंगे, तुम लोग पूरा लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, compound contains atoms of compound contains atoms of two or more elements. Compound contains atoms of two or more elements combined chemically
combined chemically in a fixed ratio by mass. That means atoms combined chemically in a fixed ratio by mass. Done. Writing is done. Yes, sir. Next Yes, sir. point. Next point. They are pure and homogeneous. They are pure and homogeneous. And try to respond first. Okay. They are pure and homogeneous. Initially, I told that compound is a part of pure substances as its definition, because if we take water compound, from every portion we will get only water molecules. So it is pure and homogeneous. Uh-huh. Pure and homogeneous. Next point. Now they have been they have a fixed melting and boiling point. Okay. They have been fixed melting and boiling point. Next, constituents constituents of compound constituents of compound can be separated. कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जिससे कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ठीक है। जैसे अगर वाटर मान ले तो वाटर किससे फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, ठीक है। केमिकल मेथड से वो मेरा सेपरेशन होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन during the formation of a compound, energy is either absorbed or liberated। ओके, जैसे ये जैसे मानो एनर्जी एब्जॉर्ब और लिबरेटेड, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग बर्निंग करते हैं, तो बर्निंग का रिएक्शन क्या होता है, कोल दैट इज कार्बन। सॉरी। सो बर्निंग का जो रिएक्शन होता है इस कोल, तो सपोज कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो हम लोग सम अमाउंट ऑफ हीट पहले सप्लाई करते हैं, ठीक है, बर्निंग को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आफ्टर दैट व्हेन बर्निंग स्टार्ट्स, then CO2 forms and it produces lots of heat. So here it is released, liberated. Okay.
And suppose nitrogen when reacts with oxygen, it requires lots of heat. Okay, lots of heat, near about 3000 degrees Celsius. So it forms 2NO. So it absorbs lot of heat. Okay, तो इतने पॉइंट्स तो याद रखना है. हुआ. Done. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट दिन तो मिक्सचर. देखो मिक्सचर भी कंपाउंड की तरह ही मोर देन वन एलिमेंट्स और एटम से बना हुआ होता है, बट मिक्सचर्स आर नॉट द प्योर सब्सटेंस. ओके. अभी तो मिक्सचर में जब उसके एलिमेंट्स या जो क्या बोलते हैं एटम्स बदल जो मिले हुए हैं वो तो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में भी नहीं रहते. लाइक कंपाउंड में जैसे डेफिनाइट प्रोपोर्शन में था, बट यहाँ पर डेफिनाइट प्रोपोर्शन में नहीं रहेंगे. प्योर सब्सटेंसेस जो है लाइक वाटर या और भी कोई प्योर सब्सटेंसेस, तो प्योर सब्सटेंसेस मिक्स होने के बाद मेरा फॉर्म करता है मिक्सचर. ओके. एंड एंड वो जो प्योर सब्सटेंसेस है इट कैन बी इधर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब वो लोग क्या करता है, वो लोग कोई भी प्रोपोर्शन में मिक्सअप हुआ. ठीक. मिक्सअप होने के बाद वो लोग अपना अपना जो केमिकल चेंज है, अपना अपना तो केमिकल चेंज वो लोग नहीं करता है. मतलब जो प्रॉपर्टी अपना था वो प्रॉपर्टी तो अपना रिमेन करता है, रिटेन करता है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी. ठीक है. देयरफॉर दे आर इम्प्योर सब्सटेंसेस. वो प्योर सब्सटेंसेस नहीं होगा. तो डेफिनेशन लिखते हैं. मिक्सचर्स इज a kind of matter mixture is a kind of matter which is formed by which is formed by mixing two or more pure substances. अब वो प्योर सब्सटेंसेस इधर एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस in a fixed ratio or in a definite ratio. Sorry, in a fixed ratio or in any ratio.
In any ratio. in any ratio. ठीक है, in any ratio. मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस जो हम लोग देते हैं उसको हम लोग मिक्सचर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। लिखो फर्स्ट पॉइंट, mixture consists two or more pure substances mixture consists two or more substances that exist together without any chemical combination between them. Mixture consists two or more substances. So we can write physically. Yes. I am dictating. You, all of you, have to read this. Write this. Mixture consists two or more pure substances that exist together without any chemical combination between them. Mixture consists two or more pure substances that exist together without any chemical combination between them. हुआ? Yes, Done? sir. हाँ, second point जल्दी लिखो थोड़ा। A mixture may be homogeneous or heterogeneous. A mixture may be homogeneous and heterogeneous. Third point. Components mixed in any ratio. Components mixed in any ratio. Next point. बताओ तुम लोग, अगर मिक्सचर मेरा इम्प्योर सब्सटेंसेस है और कंपाउंड मेरा प्योर सब्सटेंसेस था, तो कंपाउंड प्योर था इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड था। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या फिक्स्ड होगा या वैरी करेगा? सर वैरी करेगा। Vary करेगा. वैसे लिखो मिक्सचर्स हैव बीन डिफरेंट और वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Mixtures have been variable melting and boiling point.
अभी बताओ, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो वैरी कर रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सर ये हीट। डिपेंड नहीं, ये डिपेंड करेगा कंसेंट्रेशन का ऊपर कि कितने प्रोपोर्शन में कंपोनेंट्स मिसे हुए हैं। अगर कंपोनेंट्स बहुत हाई अमाउंट में रहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, लो रहेंगे तो लो होगा। लिख लो, द वेरिएबल बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स। सर सेम पॉइंट। हाँ, उसी उसी में लिखो, वेरिएबल बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड on the proportion of the components depends on the proportion of the component. Next point लिखो, the components of mixtures can be separated. The components of mixtures can be separated by physical methods. By physical methods. ठीक है। And last point, usually no energy change takes place during the formation of mixture. सर प्लीज रिपीट। Usually no energy change takes place Usually no energy change takes place during the formation of mixture. Done? यस सर। यस सर। Okay. Now this mixture is a two type. Okay. It's divided into two major types. One is homogeneous mixture and second is heterogeneous mixture. Okay. देखो, होमोजेनियस मिक्सचर तब होता है, मान लो कि ये मेरा
वाटर था। वाटर में हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 स्पून ऑफ सॉल्ट। हम लोग 1 स्पून ऑफ सॉल्ट को इसमें ऐड किए, ठीक है। तो आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, what we will see? Only water. Salt molecules are able to see or not? हम लोग तो सॉल्ट मॉलिक्यूल देख पाते हैं जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब No, sir. Sir, they dissolve in it. डिसॉल्व। तो देखो, when two compounds mixes with each other uniformly means after the mixing of them we can't distinguish them by our naked eye। हम लोग यहाँ पर naked eye से सॉल्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, इन विच both of the compounds or elements mixed with each other uniformly and make a single state, means only one state, is known as homogeneous. But what will happen if in one glass of water we will add some sand, suppose sand particles are adding, then after the mixing sand molecules will be collected at the bottom of the beaker, okay। bottom of the beaker हमको sand मिला। So in this case we are able to distinguish water molecules and sand molecules। That means this mixture is non-uniformly mixed। This kind of mixture are known as heterogeneous and this kind of mixture is known as homogeneous। Now look at here, salt molecules is distributed throughout the water here, throughout the water। If you take any portion you will feel the taste of salt and water, but here sand is deposited at the bottom, not distributed throughout the water, okay। It can be seen easily and separated, but here salt cannot be seen, got it। So what will be the definition for homogeneous mixture? We can say that the mixture in which components are mixed with each other uniformly and distributed throughout the mixture, throughout the volume or mixture, and cannot be seen separately, and cannot be cannot be seen separately, those are known as homogeneous mixture। यहाँ पर भी सेम लाइन लिखना है, द मिक्सचर इन व्हिच कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड विथ ईच अदर नॉन यूनिफॉर्मली। जो वर्ड्स चेंज हो रहा है हम सिर्फ वो लिख रहे हैं, बाकी जो वर्ड्स है वो सेम है उसको नहीं लिख रहे। नॉन यूनिफॉर्मली एंड आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। एंड नॉट distributed equally throughout the
volume and can be seen separately and can be seen separately are known as heterogeneous one. एग्जांपल्स दे तो जो बताए सॉल्ट इन वाटर और ये हो जाएगा सैंड इन वाटर। न्यू मीटिंग आईडी के लिए वेट करना। माई स्कूल से नया आईडी आ रहा है तो भेज रहे। लिखो इसको जल्दी से। डन। Yes, sir. अभी बताओ अगर हम लोग एलॉय माने, एलॉय का डेफिनेशन पता है सबको? व्हाट इज एलॉय? नहीं सर। एलॉय इज एन मिक्सचर ऑफ मेटल या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग ब्रोंज सुने हैं, ब्रोंज